कई दिनों के बाद बातचीत हो रही है. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आप सब ठीक हैं. Today's session, actually there were some questions related to American literature. Some students wanted to know what exactly they should read in American literature, American writers and books written by those writers. So today we're going to talk about them, and I'll also try to answer your queries, your concerns, as the exam is in September, and again there is a information that exam can go to November, like just like last year it was in September and again it went for November. So let's hope for the best for the students. उम्मीद करते हैं आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो. आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सहा है, बहुत सह चुके हो, तो इतना भी गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि उसका विश्वास ही खत्म हो जाए. हेलो ऋषिकेश, कैसे हो, क्या हाल है? जब एक्चुअली एग्जाम जब पास में होता है ना तो एवरीबडी गेट्स ओरिएंटेड. लाइक आप, मैं, सब एक ओरिएंटेशन के साथ काम करते हैं, प्रॉपरली काम करते हैं, क्योंकि वी नो वी हैव अ टारगेटेड डेट. फिर क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स आगे पीछे करती रहती है, एंड दिस इज हाउ यू कैन यू फील दैट यू आर नो मोर कनेक्टेड, यू फील लाइक डिसकनेक्टेड, एंड यू फील लाइक लॉस्ट. सो दिस थिंग वाज हैपनिंग. कैसे हैं आप सभी? स्मिथ, श्रीमाली, कैसे हैं आप? यू आर फ्रॉम गुजरात. केम छो? नहीं, हेल्थ खराब नहीं है. आई एम फाइन, आई एम गुड. थोड़ा वो यूपीएससी वगैरह में ज़्यादा बिजी हो गया था. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ बुक ऑफ CUET. Abhinay is here from Tamil Nadu. One of my student from Tamil Nadu, her name was Abhinetri. So that's very much matching name, Abhinay, Abhinetri. So the student from Tamil Nadu, vanakkam to you. Pranav, you are a Bengalian from Allahabad. That's the beauty of India. That's amazing. Vivekanand from Odisha. Wow. Right now in my offline batch, I have a student. His name is Karl Marx. His name is Karl Marx. Imagine. जम्मू कश्मीर से भी we have students here. Wow. आसाम से, बिहार से, बिलासपुर. Wow. छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया. That's amazing. So before we start the session, this is one of my new book that I'm going to read. It's a new purchase. I'm going to read it. It is not related to English literature. It is simply related to anthropology, society. So the fortune at the bottom of the pyramid. The fortune at the bottom of the pyramid. This book written by C.K. Prahlad. It has been recommended to me by a JNU professor. So this is my new purchase, and I've just started. Only 7 to 8 pages I have covered. I still have to read it and cover it. Personal update. I have been contacted by 2 big YouTube channels, Quint News, Wire News. Like maybe in future we can have a news together for NTA Net. So they wanted me to come for NTA's, a proper broadcasting on NTA, this particular thing, NTA Net cancellation and all. But unfortunately, my assistants, they do not connect me directly. So they called my office, and we were late by 2 days. Like after 2 days, they told me that, sir, someone from Quint is trying to talk to you. I was like, Quint, come on, connect me. So then I got to know that we are late, and now we will have to wait for the next segment. So hopefully, maybe in a month, maybe 2 months, someday, we will be talking about NTA Net, future of Net, how students are suffering, and we'll try to bring it in front of the nation. The nation would know that this is happening with students. So guys, let's start our today's topic, American literature, what exactly you should read for your exams. See, as it's a live session, and here I have to give you most important ideas in a very limited or brief time. So I'll simply suggest some things which are very important. The very first thing, some students who are reading American literature and are starting with American history, they are making a mistake. No need to go for American history. No need to go for American liberation. No need to go for the fight of Americans with others. This is something that will divert your proper attention from the American literature. Remember this thing, we are studying English literature. So in English literature, it is England, England's colonies,
or the books which are in translation, or how the world literature gets connected. So I suggest, instead of reading American history, American independence, American revolution, everything and all, you can simply take 1 hour. 1 hour is enough to find out some brief. Just find out the brief. Like, the Americans used to have war with France, war with Canada, war with English people. So the father rallies war, that is more than enough for history. Then just try to know the Knickerbocker group. Also, we can simply say the blue stocking. The leather stockings. These kind of people, those who used to rebel against the colonizers. Then the idea of American independence, American issues with Britain, like on American taxation, that has been written by Edmund Burke. So some minor informations are enough. When America was discovered in 1492, that is also to be remembered. But primarily you have to focus on American literature. And now we have two type of American literature. The first American literature, which was under the influence of British literature, like the fireside poets. So they had direct British influence. But then we have Native American writers who actually brought American literature to the front. Washington Irving is known as the father of American poetry. James Fenimore Cooper, these kind of writers. So the Native American writers like Fenimore Cooper, Washington Irving, then other writers, William Cullen Bryant and all, these kind of writers are very, very important. You have to read the basic works. Then go for the writers who made America, America proud of their works. Like, there are some writers jinki classic works hai. Here we find out Hemingway. If you are preparing American literature, you don't know Ernest Hemingway, or you only know Old Man and the Sea, you have read just one story, Farewell to Arms, or The Sun Also Rises, you have not read these things, it means you are not doing justice. Hemingway is very important. Read everything. Then Arthur Miller. If you have read just one work, Death of a Salesman, and you think you are prepared with American literature, you are making a mistake. You have to read the Crucibles, you have to read the Misfits, you have to read the All My Sons. Especially All My Sons, Misfits, Crucible. ये तीन extra पढ़ना है आपको. Eugene O'Neill, you cannot stop reading Eugene O'Neill after reading just one book, Harry Ape. Most of the Indian students are studying Harry Ape. You must know Emperor Jones. You must know Desire Under the Elm Tree. Eugene O'Neill was a great writer with 4 Pulitzer Awards. There are 4 books by Eugene O'Neill which have won Pulitzer Awards: Beyond the Horizon, Strange Interlude, Long Day Journey into the Night, and Anna Christie. So you must read all of these things. And same time, like simultaneously, you must go for the American poets who are unbelievable, who are different than other writers. Starting with Robert Frost. Most of the students who say that they have read American literature are actually knowing Robert Frost and just one work, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Then some say, no, sir, we also know Birches. Some say, sir, we know Apple Picking. Some say we know The Road Not Taken. Yes, you will have to read at least 6 to 7 works. The lines are very, very important. Good fences make good neighbors. Or maybe The Road Not Taken, The Road Off Taken. These kind of lines are very, very important. So make sure when you read Robert Frost, you remember the collection, publications, and some 8 to 10 works. Then go for Walt Whitman, Leaves of Grass. It's very important. The quotations have been asked. Along with these things, when the lilac laughs in the dooryard bloom, they are very, very important. Then it's like, when you read these writers, you'll find out we have Sylvia Plath. Most of the people, they avoid Sylvia Plath or they don't read her. They just take her as a feminist writer who died. Sylvia Plath was not a proper feminist writer. It's just someone who is known as confessional writer. Her famous work, Daddy, it's very important. Then there are some other works also you can read. Along with these things, there is a famous writer, Wallace Stevens, the man with the blue guitar, that has been asked in an exam, that you have to know. Then the writers who are American and have written in different genres, Emily Dickinson. That's, the grave kind of poetry, death poetries. The death didn't stop for me, so I stopped for death. I heard a fly buzz in my ear. These are very, very important works. Emily Dickinson, you have to check these things.
Then there are some writers who are American writers but are writing about future. John Updike, a Rabbit series, Rabbit Rich, Rabbit Rest, Rabbit Remembered, Rabbit Retired, Rabbit at Work, Rabbit Run. This is Rabbit Angstrom series. Then here in the same story we have Harper Lee. To Kill a Mockingbird is a world classic and there are multiple questions asked in exam. Harper Lee, To Kill a Mockingbird. ये सब चेक करते जाओ, एग्जाम पास आ गया, the exam is very close. If you haven't read these things, this is the time to revise. ठीक है? Then go for Philip Roth. Plot Against America. I Married a Communist. Columbus. These are the important works by Philip Roth. Along with these things, you have to go for one more writer, the one who wrote In Cold Blood, Truman Capote, one of the most celebrated writer in America. Then we cannot complete American literature without studying Edgar Allan Poe. You have to read Edgar Allan Poe. Then he is the first, detective story writer. The Murder in the Rue Morgue is one of the famous work written by him. It is a must-read book. A very, very important work. Along with these things, there are some writers who have written just one or two works, but they are classics. Moby Dick, written by Herman Melville. It's very important. Herman Melville's Moby Dick, you cannot leave that book. Then F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. The Great Gatsby is a classic. Just one writer, one book, it's a classic. Herman Melville, one writer, one book, it's a classic. Then yes, Sharvani has written this. Stephen Crane, Red Bells of Courage. Yes, I was coming to this writer. Very, very important. You have to be prepared with these things. And my friends, who can forget Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne. Scarlet Letter, the famous witch hunting, Salem trial, Salem witch hunting. So in short, make sure you have read these things. I have counted about 30 names, 30 plus names. There are a lot. Like if I add Afro-American writers, if I go for more writers, then like Marilyn Robinson and other writers I add, they will become a lot of writers. But right now I won't overburden you. We will do a separate session for Afro-Americans. Make sure whatever the writers I have mentioned here, they're all prepared by you. Do not forget R.W. Emerson. If you read R.W. Emerson, you must know the poetry Brahma, Hey Mitraya. You also should know nature. Then his lectures, Phi Kappa Beta Society, his lectures are there. Then you have a writer who has written Walden, H.D. Thoreau. Walden, this is very, very important. Along with these things, there are many other writers who have either written American Tragedy, Theodore Dreiser. It's very, very important work. Then Sister Carrie is written by same writer. You have to go for these writers also. They actually make you understand what American literature is. And it's my personal opinion. It's my personal opinion. I won't say that it's should be taken for a debate. But I think some American novels alone can compete British history, British novels, British standards. Because I have found that the realistic approach is amazing. अगर आप मुझे पूछोगे ना तो 10-12 अमेरिकन राइटर्स अकेले पूरी ब्रिटिश लिटरेचर को टक्कर देते हैं. आई एम नॉट सेइंग दे कम्पीट शेक्सपियर, आई एम नॉट सेइंग दे कम्पीट मिल्टन, बट अगर होता ना कि you read 10-15 books and you feel like you have read a lot, wow, so that's American. They give you the sense of completeness that you have read those writers and you got a sense, yes, wow, you have read something. So I find that naturalistic approach, naturalism in theater, naturalism in writing, and I think that's why Americans are far better. Americans are portraying emotions in a far better way. So I suggest you that please complete these writers. It's a kind of recap for you. And there is a question, guidance for Gujarat set. When do you have your exams? West Bengal set, exams are announced, forms are being filled. So please go for West Bengal set, forms are being filled. GATE exam, 30th of August. This time 80%, 85%. 85% questions will be from literature only. Wow, Gujarat set 6 November को है. You have time. I didn't know that. WB set is 8th January. 8 जनवरी को है. अच्छा फॉर्म आ रहे हैं 4 दिन में गुजरात सेट के. I'm दो बार क्वालिफाइड गुजरात सेट.
They're not giving certificate. They say just go and get your birth certificate. Now, who has time? I go to my native place. It's a government work. Ask them, request them, stay there for 5 7 days and get your birth certificate. Anyway, I don't know. Just share the information whenever Gujarat set is, released. Yes, Oliva, I will definitely go for WB set. West Bengal set में appear करूँगा. Let's see where do I take my center. Most probably I'll take the center of North Bengal University, where it is Siliguri, Darjeeling, because I'll prefer to go for a bike ride Darjeeling, Sikkim, Gangtok. So if I take my center there, I can have 3 4 days. I can stay there for 3 4 days. So 99% I'll go for North Bengal University Center. I also have Calcutta in my list, but can't say. Smith, मैं गुजरात सेट 2 बार क्वालिफाइड हूँ. आई डोंट फील लाइक अटेम्प्टिंग गुजरात सेट वंस अगेन, बट लेट्स सी. हेलो मंजू, हाउ आर यू? मंजू ने ज्वाइन किया अभी. गुजरात सेट, लेट्स सी. जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन. इफ आई फील दैट आई कैन अटेम्प्ट इन नवंबर, आई कैन बी देयर, आई विल गो फॉर इट. हु डजंट वांट टू बी इन अहमदाबाद? नेहा, दैट्स वेरी सैड, वेरी सैड. इतना पास के मार्जिन से तो आई कैन, आई सिंपली अंडरस्टैंड योर पेन. इतना पास जाके फेल होना. Calcutta is in my list actually. Calcutta is a city of culture and I really want to go to Calcutta when I have approx 7 to 8 days. I actually wanted to go for vlogs representing culture, cultural heritage and literature. But then it will take a lot of time and I'm not able to get to these things. Mostly involved in UPSC standards. UPSC standards are in-depth standards. मंजू, हरियाणा से ही घर जाता हूँ मैं. हरियाणा होते हुए घर जाता हूँ. Jyoti Pradhan, I have qualified Chhattisgarh set. I have been to Raipur. I stayed in Hayat Hotel. And why it's memorable for me? Because I found 11 to 12 students from my online offline classes and center, Raipur center. So I asked them to come for dinner in Hayat. And 2 of them were very much inspired to see a 5-star for the first time. They were telling me that, sir, we have got a new fire in us and we really want to do something like this. तूफान, हम जरूर मिलेंगे. शांति निकेतन इज इन माई लिस्ट. शांति निकेतन मुझे जरूर आना है. अंजू का क्वेश्चन है, इट्स अ काम का क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट डू वी हैव द एग्जाम ऑन द फिक्स डेट. सो कांट से, मैं क्या बोलूं. हम किस पे भरोसा कर रहे हैं? एनटीए पे. तो एनटीए सेट जून फर्स्ट वीक, देयर वाज अ ट्वीट. देन दे वेंट फॉर जुलाई. जुलाई में 3 एग्जाम करवाए. देन सेड लेट्स गो फॉर अगस्त. August again they was for September. Last year again they took to September, saying and doing the same thing, postponing. They took to September and then September to November. So maybe if they do the same thing they can do it. I cannot say anything for NTA. तभी तो आज क्विंट इंडिया का कॉल आया था मेरे पास. They wanted कि हम लोग कुछ YouTube पे डालें उससे related. So that's something stupid. Meta-drama is a drama which is not just being read. Drama is a fiction, is something we are reading, we understand it. Meta-drama is the dramatical devices, theatrical devices that actually connects us to the drama. यानी कि जैसे for example characters are on stage and characters are actually the part of a story, but the characters talk to you also, audience, which is called breaking of the fourth wall. That is called meta-drama. Just like sometimes the characters in the movie talk to the audience. That's meta-drama style. प्रकाश विश्नोई, डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, मिलेंगे हम लोग. देखो 6% क्राइटेरिया होगा नहीं होगा, क्या होना चाहिए, नहीं फर्क पड़ता. देखो स्टूडेंट्स एक्चुअली ना ये आपके साथ गेम खेलते हैं. ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि अरे 12% या 6%, व्हाट इज दिस फाइट. है ना, एनीबडी नोज दैट 6% ऑफ 100 इज 6 and 6% of 200 is 6. It's not like that. Life is not always mathematics. Life is not always about mathematics. Did you get my point? जिंदगी में हर चीज मैथमेटिक्स से नहीं हो सकती. आपको लगता है हो सकती है? दुनिया में हर चीज मैथमेटिकल होती है? Tell me this thing. .
राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं. What is 1+1? विनीत पांडे स्टाइल एग्जाम्पल दे रहा हूं, शायद अच्छा लगे. What is 1+1? Tell me. 1+1. What is the result? Anand has given the answer. Yes, 1+1 can be 11 in a situation, 1+1 can be 2 in a situation, and 1+1 can be 3. Husband, wife, 1, the baby birth, 3. So how can you say that it's always 1 and 1 plus yani 2 you are? You are saying 100 students, 200, 6% is again same. What about those 100 students who would have qualified and didn't apply again? What about time factor, 6 months? You cannot say. Otherwise, you know what will they say? They will start taking net exam once in a year, and when you will complain, they will say, what is the problem? You attempt one attempt and you qualify to do it in once in a year. एक ही बार तो qualify करना है, साल में एक बार कर लेना. No, 6 months means 2 attempts. So that's how they play with you. They will say that, okay, you want to eat. Okay, eat once in 24 hours. But no, that is not the requirement. The body requirements are for breakfast, for lunch, for dinner. So what they are doing, they are snatching breakfast, they are snatching lunch, and they are forcing you to go for dinner. That's how they are troubling you. इसलिए आपके साथ गेम खेल रहे हैं. Education standards have been compromised. Education standards बर्बाद किए जा रहे हैं, जानबूझ के हो रहे हैं, नौकरियां है नहीं. ठीक है. National Tension Agency, National Torture Agency, whatever you want to call them, they're doing it. But now the question is that what should we do? So we cannot sit back and only complain. We have to study. We have to be qualified. Forget exams. Forget degrees. Study for your knowledge. पढ़ने की करते रहो, पढ़ाई करते रहो. क्योंकि पता है क्या होता है? Politicians क्या करते हैं? आपको किसी और चीज में उलझा देंगे. इसमें लग जाओ, उसमें लग जाओ. In short, yesterday there was a news, somebody forwarded a news and said net is no more important for PhD and for job. But it was not a national level news. I asked him that where did you get that news? He said, sir, forward. I asked him to contact the person has forwarded. Again he said, sir, he also got a forward. So there are apps, there are mobile apps, they create these kind of fake newses and they start troubling. See, Agniveer is a joke. Agniveer, they are playing with our soldiers. Emotions के साथ खेल रहे हैं. And as far my knowledge says, Agniveer is actually they are arranging their own private security guards. वो खुद को in future civil war से बचाने के लिए secure कर रहे हैं. 4 साल के लिए आप किसी को सोल्जर बना दो और फिर पूरी लाइफ उस बेचारे को बोलो कि जाओ कुछ भी काम करो, कैसे करेगा? फौजी तो once a फौजी is always a फौजी. That's very disgusting. This is really sad to see that they are playing with our Indian armed forces. Indian army के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, but they're doing it. Neha, there are not only just one writer. See, he's the postmodern writer. There are many other writers. And obviously, they believed in this thing that the meaning doesn't exist. But that is also the philosophy. There is no meaning of life. There is no meaning of life. Meet an old man, 90-year-old man. Ask him the meaning of life. He'll say there is meaningless. एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, your views on लाल सिंह चड्ढा. First of all, I didn't watch it. I have not watched it. It's not because people are boycotting it. If somebody is boycotting Lal Singh Chadda, he is a threat to India. Okay. Second thing, I didn't watch it because I couldn't get time to watch. I really want to watch it. Forrest Gump itself was an amazing movie. So converted the same theme converted in an Indian scenario is something to be watched. Now, Lal Singh, somebody is writing, Anand, this is really unexpected, Anand. आपसे बहुत उम्मीद है मुझे. बाइकॉट गैंग या बाइकॉट स्ट्रक्चर्स, क्या आमिर खान ने क्या कह दिया ऐसा? किसी एक मूवी में गॉड्स का मजाक बना, मोहल्ला 80 देख लो. गॉड्स का कोई मजाक नहीं बना रहा है. इट्स योर अंडरस्टैंडिंग. If you say Amir Khan made fun of Lord Shiva, hope you understand he is playing a character, an alien who doesn't know what is Lord Shiva. तो कैसे मजाक हो गया? तो जो पागल आदमी तो शिव जी के मंदिर में जाके दूध पी जाएगा तो मजाक हो जाएगा देश का. तो वो तो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना.
What they show you, Amir Khan. What they don't show you, 1000 other characters, other people who are involved in that movie. There are Hindus, वो आपको भड़का नहीं सकते. So what they do? They take a Muslim character and they make you attack. Mohalla is there are some other jokes on gods, हंसी मजाक चलता है. You don't have to be biased. And one more thing, if you see you boycott Lal Singh Chadda, so Amir Khan will cry. अरे बहुत बड़ी चीज है. It doesn't even care, and Netflix has purchased that. Amazon will purchase that. They will not face any loss. But the trending boycott system is actually giving them a lot of income. So I suggest, yes, आपने मोहल्ला से देखी है, there is a scene, भगवान शिव सबसे भीख मांग रहे हैं, तो भगवान शिव थोड़ी है. That is the reality. Somebody has painted his face like Shiv. I am a Hindu Brahmin, but that I am not like that. That okay, you insulted my God, you insulted my God. I have faith in my God in all the fair sense. I am not like that. Oh, you insulted Lord Shiva. You know, in Delhi, when I go to my office, every Saturday we find a lot of beggars dressed up like Shani Dev. So should I start killing everyone? That oh, you are insulting. I know that is reality. So if there's somebody is trying to portray, it's all right, it's fine. You are literature students. They are showing you Amir Khan. They are not showing you the other Hindus all around the movie. Was it made by Amir Khan only? One man camera, one man writing, one man song, one man screenwriting. They are using your emotions because you will forget your exam. You will get involved. आपने बाइकआउट किया लाल सिंह चड्डा को, आपका क्या बेनिफिट हुआ? आपका एग्जाम हो गया टाइम पे? आपके घर में बिजली सस्ती हो गई है, जीएसटी लग गई है, पेन पेपर इंक पे जीएसटी लग गई है दोस्तों, किताबें महंगी हो गई हैं, टीचर्स पे जीएसटी लग गई है. डू यू थिंक टीचर्स पे जीएसटी लगेगी? मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ा सा वो है, राइट विंग है. ही वॉज हैप्पी. ही सेड विनीत पांडे, अब तुम पे जीएसटी लगेगी. तो कम ऑन, आई विल रेज माई सैलरी. कहाँ से आएगी? स्टूडेंट से आएगी. आपकी फीस बढ़ जाएगी. तो ये सब मजाक, देश के साथ मजाक हो रहा है. इनके बॉयकॉट ट्रेंड में मत पड़ो, हिंदू मुस्लिम इश्यूज में मत पड़ो. व्हाट मीडिया इज शोइंग यू इज 90% फेक. लड़ो. ये लव जिहाद वगैरह कुछ नहीं है यार, ये सब जबरदस्ती फैलाया हुआ है. अब तुम इसके पार्ट बनना चाहते हो तो बन जाओ, लेकिन अगर थोड़े से समझदार हो, थोड़ी सी भी अक्ल है और अपनी प्रायोरिटीज देख रहे हो. कोई कहे ना कौवा कान लेके भाग गया, तो कौवे के पीछे मत भागो, अपना कान चेक करो. कोई कहे ना हिंदू खतरे में है, भैया मुझे तो नहीं लग रहा हिंदू खतरे में. आसपास हिंदू खतरे में जीएसटी से है. दूध पे दही पे जीएसटी लगी, हिंदू वहां से खतरे में. सो डोंट फाइट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. मेरे स्टूडेंट्स हो, अदरवाइज जनरली मैं पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देता हूँ. पॉलिटिक्स में दोनों पार्टीज खराब है. ऐसा नहीं है कि एक पार्टी खराब है, सारी पार्टियां खराब है. क्योंकि सारी पार्टियां खुद को सपोर्ट करेंगी, आपको नहीं करेंगी. तो आप अपने लिए लड़ो, अपने लिए काम करो. मेरे पास ऑफर है पार्टियों से ज्वाइन करने के, उनको दिखता है फैंस हैं, स्टूडेंट्स हैं. आई डोंट वांट टू गो बिकॉज मुझे पता है द वेरी ओरिजिनलिटी दैट आई एम स्टिल कैरिंग समवेयर इन माई हार्ट, इट विल बी किल्ड. आई डोंट वांट टू डू दैट. मेरे पास एक बकायदा ऑफर था कि एक पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करो, आपको जेएनयू में परमानेंट वैकेंसी दिलवा देंगे हम, सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में. मैंने उनको पता क्या बोला, मैंने कहा सर मैं जेन्युइनली ना आपको सपोर्ट नहीं करता, मैं जेन्युइनली कर नहीं पाऊंगा सपोर्ट. आपको उम्मीद होगी मुझे प्रेज करेगा, हमारा प्रोपेगेंडा आगे फैलाएगा, स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करेगा. मैं बाय हार्ट आई एम नॉट दैट पर्सन, मैं कर ही नहीं सकता. आप मुझे कितना भी कास्टिज्म, कितना भी भाषावाद, ये हमारे, आप पहले हिंदू मुस्लिम पे लड़ते हो. अभी एक लेडी किसी बिहारी को बिहारी बिहारी बोल रही थी. क्या हो गया बिहारी? ये तो पाकिस्तान में क्या बिहारी? हमारे देश का पार्ट है. इंटेलेक्चुअल्स निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी के पास. तो वी कम फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पे हमारे अंदर हर वर्ड पे हेट है. हिंदू मुस्लिम हेट है, एससी एसटी इसके नाम पे हेट है, जनरल के नाम पे हेट है. व्हाई डू वी हैव टू गो फॉर दैट हेट? सो आई एम अ पर्सन जो ना तो कास्ट के नाम पे लड़ने वाला है. आई एम अ पर्सन जो रिलीजन के नाम पे कभी नहीं लड़ेगा. और मैं आई विल बी द लास्ट मैन ऑन अर्थ जो रिलीजन और कास्टिज्म के नाम पे लड़ने निकलेगा. देयर आर प्रोपेगेंडाज. कोई मेरे मुंह पे आके बोलता है ब्राह्मण्स हैव डन रॉन्ग, आई कैन एक्सेप्ट इट. कैन वी से 100% ऑल द ब्राह्मण्स वर गुड? नो. कैन वी से ऑल द 100% ब्राह्मण्स वर बैड? दैट इज ऑल्सो नो. सो दैट्स फाइन. किसी ने लिखा क्या आप रोज पूजा करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं रोज पूजा पाठ नहीं करता. बट इफ आई एम पासिंग बाय गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, आई ऑलवेज डू लाइक दिस. दैट्स माई प्रेयर. आई बिलीव इन लिविंग माई लाइफ विद एनिमल्स, सो आई मोस्टली स्पेंड टाइम विद माई एनिमल्स. मेरे आसपास के जो डॉग्स हैं मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं, स्ट्रे डॉग्स.
दैट्स मेरे व्यूज। डाल मत देना कहीं, क्योंकि कुछ लोग ये सुनना नहीं चाहते कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को समझा रहा है। कुछ लोग ये सच में नहीं सुनना चाहेंगे कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खतरे में है, किसने किसका क्या किया। तुम्हारा घर तब चलेगा जब तुम क्वालिफाइड होगे। गुजरात सेट के लिए ब्रिटिश हिस्ट्री ध्यान रखो, ब्रिटिश हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो। स्टेट एग्जाम्स के लिए एक्चुअली ब्रिटिश हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक ने लिखा है कि किंग ने लिखा है कि आप पूजा नहीं करते इसलिए आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जो पूजा करता है उससे ज्यादा नॉलेज होगा मुझे हिंदू धर्म के बारे में। अगर आपको लगता है किसी से डिबेट करवाएं तो करवा लीजिएगा। मैंने कुरान शरीफ का इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ी इंग्लिश में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माय फादर इज अ डिवोटी, तो मैं गीता वीता डिस्कशन करता रहता हूँ उनके साथ। रामायण की चौपाइयाँ भी 2-4 तो आती ही हैं मुझे। इट डजेंट मैटर कि आप क्या, आप प्रे क्यों करते हो, आप डर के मारे प्रे करते हो यार। हर प्रेयर में आप कुछ ना कुछ मांगते हो, हर प्रेयर में कुछ ना कुछ मांगते हो, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना। जिस दिन गॉड कह देगा ना कि आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, पूजा करना करो, कोई पूजा नहीं करेगा। ठीक है, ये रिलीजियस डिबेट के लिए किसी और चैनल पे मुझसे डिबेट करो, यहां मत करो, जाने दो। तुम उसी गॉड की पूजा करते हो जो गॉड से तुम्हें उम्मीद होती है कि नेट करा देगा, अमीर बना देगा, JRF करा देगा। वाई? मंगलवार को बोलते हैं कि हम शराब नहीं पियेंगे, हनुमान जी देख रहे हैं। मंडे को हनुमान जी छुट्टी पे होते हैं, थर्सडे को हनुमान जी छुट्टी पे होते हैं। इट्स ऑल राइट। आई सी माई फ्रेंड्स डूइंग दिस थिंग। आज शनिवार है, ये नहीं करना, मंडे है तो वो नहीं करना। अरे क्या, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अराउंड यू, हर सेकेंड आपके आसपास है। लिटरेचर का डिबेट कहीं और जा रहा है। आपका ओपिनियन क्या है? क्या हिंदुइज्म साइंटिफिक रिलीजन है? कोई भी रिलीजन साइंटिफिक नहीं है। सिर्फ ये रिलीजन्स इसलिए बनाए गए हैं कि वी कैन हैव अ ब्यूटीफुल सोशल स्ट्रक्चर। सारे धर्म अगर ठीक से फॉलो किए जाएं तो समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन होता क्या है, हर धर्म का हम एक साइड से एक ऑप्शन निकालते हैं और उसको अपने पर्पज से यूज करते हैं। आई रिमेंबर एक बंदा कह रहा था राम लला जो है वो रो रहे हैं और मेरे सपने में आ रहे हैं। रियली राम को लगता, राम भगवान को रोना पड़ेगा तुम्हारी हेल्प लेने के लिए? You know, my idea is love God, appreciate God, but also remember the good things. Don't convert those things in the bad ones. ठीक है, हर रिलीजन में अच्छाइयां हैं, हर रिलीजन में कमियां हैं, सब में कमियां हैं, सब में अच्छाइयां हैं। चलो, let's not go for unnecessary debate. I know it's a very interesting topic. I would have loved to discuss things. आपकी अपनी ओपिनियन सही है और आई एम नॉट सेइंग कि किसी की ओपिनियन गलत है। आई विल एंड अप दिस सेशन विद अ सिंपल मैसेज। डू नॉट फॉलो अ रिलीजन दैट मेक्स यू हेट अदर्स। अगर आपको अदर्स से कोई नफरत करना सिखाता है, कोई भी धर्म, तो ऐसा रिलीजन मत फॉलो करो। और दूसरी चीज, धर्म के नाम पे तो कभी मत लड़ना, क्योंकि कोई तो एक ऐसा होगा जो आपका फायदा उठा रहा होगा, कोई तो होगा जो आपको धर्म के नाम पे लड़वाएगा। तो मत लड़ो। भगवत गीता बहुत अच्छी धार्मिक किताब है, ये मेरा विचार है इसमें। आप जो पूछ रहे हैं ना, बहुत अच्छी है। जो बहुत अच्छी बातें भगवत गीता में लिखी हैं, जब मैंने इंग्लिश वर्जन पढ़ा था बाइबल का और कुरान शरीफ का, उनमें सेम बातचीत है, सेम बातचीत है। आप सिर्फ ढंग से पढ़िए उसको। मैं ये चीज देख रहा था कि लोगों को नॉलेज नहीं है। आपको पता है, आपको अकबर और महाराणा प्रताप पढ़ाया जाता है ना, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं अकबर से चिढ़ता हूं। आपको पता है अकबर एंड महाराणा प्रताप फाइट वाज नॉट हिंदू मुस्लिम फाइट। आपको पता है, इट वाज नॉट हिंदू मुस्लिम फाइट। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी। ही वॉज द सेनापति ऑफ महाराणा प्रताप। एंड अकबर सेनापति मान सिंह। So a Muslim सेनापति is a Hindu and a Hindu सेनापति is a Muslim. It was not Hindu-Muslim war. इतिहास पढ़ लो, वो आपको दिखाएंगे ताकि आपको लड़ना पड़े। ठीक है, महाभारत B.R. चोपड़ा, जिसको आप बहुत ध्यान से देखते हो, आपको पता है महाभारत की पूरी कहानी किसने लिखी है? राही मासूम रजा। उन्होंने इतना रिसर्च किया महाभारत में कि पंडितों को नहीं आता होगा। रामायण में सबसे ज्यादा कैरेक्टर प्ले करने वाला लड़का असलम खान। महाभारत का सबसे फेमस कैरेक्टर अर्जुन,
जो कि अर्जुन नहीं है, वो मुस्लिम कैरेक्टर है। तो हम इस देश के हैं यार, हम सब मिलके रहने वाले हैं, ठीक है? किसी के भड़काने पे मत आया करो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।